Hello everyone, welcome to Study Rumble and a very good morning to all of you. I am Tushar and let's start the today's daily vocabulary session. This is set number 2 and if you want the PDF of this session then go and join the Telegram channel. Link is given in the description. So let's begin the session without any delay. So alright, first word of the day is Troglodyte. Troglodyte is a noun and its meaning is a person who lived in a cave, or it also means a person who is regarded as being deliberately ignorant or old fashioned. In Hindi it means एक ऐसा व्यक्ति जो गुफाओं में रहता है या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट है, ओल्ड फैशनड है, दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल कट के रहता है दुनिया से, उसको हम कहते हैं ट्रोग्लोडाइट. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो देयर आर हाउसेज हैविंग केव लाइक स्ट्रक्चर, सो पीपल हु आर लिविंग इन दीज हाउसेज आर कॉल्ड ट्रोग्लोडाइट. नाउ लेट्स लुक एट सम ऑफ इट्स सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. So its synonyms are hermit. Hermit also means a person who lived in a very small house, very packed house, or a house having low roof. Then recluse, after that solitary and Incite. So all these are synonyms of troglodyte. Now let's look at some of its antonyms. So its antonyms are social, gregarious. Gregarious means a person who wants to meet other people. Then extrovert, then inhabited. All these are antonyms of the troglodyte. Now let's move on to the next word. So next word is maverick. Maverick is a noun and its meaning is a person who does not behave or think like everyone else. Sometimes it also means a person who is against the rules and regulation of the society, a person who is against the society, who doesn't live according to the standard of the society. So that also means maverick. As you can see in this picture, a person is surfing on the highways, which is very unusual. So he is a kind of person who is maverick, who is against the normal things. Okay. Now let's understand the meaning of maverick in Hindi. So in Hindi maverick means एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल समाज के कायदे कानून से बिल्कुल हटके सोचता है, हटके काम करता है. लाइक जैसे आम लोग सोचते हैं वैसा सोचता ही नहीं है, बिल्कुल उसकी सोच ही अलग है. बिल्कुल एज यू कैन से बहुत ज़्यादा, आप इसे पॉजिटिव वे में नहीं कहेंगे क्योंकि पॉजिटिव वे में तो इनोवेटिव हो जाता है. ओके, सो मैवरिक एक नेगेटिव वर्ड है. आप पहली चीज़ ये ध्यान रखिए. मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता भी हूँ कि भाई किस वे में आपसे कहना हो कि हटके काम करता है. जैसे लेट्स सपोज एक छोटा बच्चा है, उसके बाकी सारे दोस्त स्कूल जाते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है. छोटा बच्चा, उसके पापा भी कह रहे हैं बेटा पढ़ो लिखो अच्छे से मेहनत करो, बट वो क्या कर रहा है, वो कंचे खेल रहा है. तो सारे बच्चे उस उम्र के स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे लिख रहे हैं, अच्छे से लाइक काम कर रहे हैं अपने स्कूल का, बट वो क्या करता है, कंचे खेलता है, गिल्ली डंडा खेलता है. तो वो कैसा व्यक्ति है, एक मैवरिक बच्चा है, ठीक है, एक मैवरिक व्यक्ति है वो, ठीक है. नाउ लेट्स हैव अ लुक सम ऑफ इट्स सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. सो इट्स सिनोनिम्स आर इंडिविजुअलिस्ट. Second is bohemian. Bohemian is very important. Many times it is asked in the exam, so remember it. Then rebel and then eccentric. Now let's take a look at some of its antonyms. Its antonyms are conformist, orthodox, conventional and babid. Babid is a very important word, so just remember it. Now let's move on to the next word. So next word is prerogative. Prerogative is a noun and its meaning is a special right that somebody or something has. Let me give an example. So let's take an example of the President of India. So President of India has the power that he can even pardon the death sentence. Okay, so it is a special power, a special right that he has. Nobody in India can has that right. Okay, so it is a prerogative right of the President of India. As you can see in the picture, Elizabeth II, the Queen of the UK, so she has some special rights. So a queen, a king, a PM, a president have some special rights and powers, so they are called prerogative rights. Now let's look at some of its synonyms and antonyms. So its synonyms are privilege, entitlement, authority and liberty. These are some very common synonyms of prerogative, and its antonyms are debarment, prohibiting, restriction, obligation. These are antonyms of prerogative. Now let's move on to the next word. So next word is inculcate. Inculcate is a verb, okay, and its meaning is to make somebody learn or remember ideas, habits, etc. especially by repeating them often. In Hindi you can say, जैसे आपने देखा होगा बच्चों में क्या करते थे, टेबल याद करते थे, बार बार उन्हें पढ़ते थे, है ना, बार बार लाइक पढ़ रहे हैं, बार बार उन्हें लाइक रट रहे हैं इस तरीके से. तो क्या होता था, इनकलकेट करना होता था. लाइक बिल्कुल हमने अपने जहन में उन्हें बिठा लिया था अंदर, बिल्कुल ऐसे कहीं ना कहीं माइंड के अंदर में सेट कर लिया कि आपसे कोई 2 का टेबल पूछे तो आप बिना सोच समझे एक ही साथ में पूरा टेबल सुना सकते हैं. तो हमने क्या कर रखा है, इनकलकेट कर रखा है, लेकिन हमने अंदर कहीं ना कहीं उसे स्टोर कर लिया बार लाइक रिमेंबर करके और प्रैक्टिस करके. सो इनकलकेट मीन्स to make somebody learn or remember ideas, habits, etc. especially by repeating them often. As you can see in the picture, these students are doing multiplication on the board, and multiplication is something which you master when you do a lot of practice or it came in your habit. Okay, now let's look at some of its synonyms and antonyms. Its synonyms are instill, implant, ingrain, imbue, and its antonyms are deprive, eliminate, strip and neglect. Okay, now let's move on to the next word. So next word of the today is abeyance. So abeyance is a noun and its meaning is a state of temporary suspension or disuse. यानी किसी चीज को टेम्परेरी बेसिस पे लाइक स्थगित कर देना या किसी चीज को टेम्परेरी बेसिस के लिए थोड़ी देर के लिए रोक लेना, उसको हम कहते हैं अबेयंस. एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, जैसे डीएमआरसी की एक अभी वैकेंसी आई थी लास्ट ईयर, CR यानी कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट, इस तरह की एक पोस्ट थी.
कोविड-19 आया तो उन्होंने उस पोस्ट को क्या कर दिया, अबेयंस में डाल दिया, यानी टेम्पररी बेसिस पे उसको भी सस्पेंशन पे डाला हुआ है। अभी जब चीजें नॉर्मल होंगी फिर से उस पोस्ट को रिवाइव कर देंगे और जिन बच्चों ने पेपर दिया उसके अकॉर्डिंग उसकी मेरिट वगैरह सब आ जाएगी। ओके, सो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट सम ऑफ इट्स सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। इट्स सिनोनिम्स आर क्वेसेंट, postpone, inactivity or dormancy, and its antonyms are revival, activity and continuing. Okay, so this is the end of this session. I hope you like it and find it useful. If you find it useful, then do like it and share it with your friends, and if you're new on the channel, do subscribe it and press the bell icon so that you never miss any update from our side. Bye bye, take care.